Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with NJ. Friends, आज है 5th January and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the trading plan for the next trading day, which will be on 6th January 2021. Well, if you are new to our YouTube channel, friends, do consider subscribing to this channel and also press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get a notification here. And be generous to share the videos with your friends and trading communities such that they can also take advantage of quality knowledge. Well, if we go to look at daily chart of Nifty and Bank Nifty today, let's look at the performance of the market of today, right? So yesterday, Bank Nifty was weak, and we saw that Bank Nifty had been last 5 sessions been consolidating in a range, but today the Bank Nifty has broken that range upside. So did the Nifty. Nifty was anyway a bit bullish from the previous trading session. Uh, in fact, if you look at the smaller time frame, the market opened gap down today, and almost initial 2 hours the market was a range bound and it was witnessing a lot of profit booking. But as the market went downside to the 14,100 level, market witnessed in fact 14,050 level. It started witnessing the kind of buying interest in Nifty as well as Bank Nifty both. ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड्थ रही फ्रेंड्स आज न्यूट्रल रही. ऑलमोस्ट 23 स्टॉक्स एडवांस, 27 डिक्लाइन फ्रॉम स्टैक ऑफ निफ्टी 50. एंड जो मेन कंट्रीब्यूटर थे आज निफ्टी के दोज वर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, HDFC Life and Wipro, while is the top losers for ONGC, JSW Steel, Hindalco, Tata Steel and Bajaj Finance. अगर हमने जो बात की थी कल के वीडियो में, हमने कल एक रेंज डिफाइन की थी निफ्टी के लिए, वो थी 13,950 से 14,250 की. एंड बैंक निफ्टी के लिए हमने जो रेंज डिफाइन की थी कल, वो थी 30,900 से 31,700 की. मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी ट्रेडेड वेल विद इन द सेम रेंज विद द काइंड ऑफ bias we talked about, right? So although the bank nifty showed a little more bullish biasness that we were expecting it to consolidate within this large candle, but it broke that range today. अगर हम निफ्टी की आज की क्लोजिंग देखें फ्रेंड्स, so it's a 14,199.5, we can say 14,200, right? And Nifty gained almost 67 points, while as the Bank Nifty gained almost 510 points, and it closed at 31,722. निफ्टी ने आज हायर हाई एंड हायर लो बनाया, सो डिड द बैंक निफ्टी. सो अप ट्रेंड कंटिन्यूज एंड एज आई सेड अर्लियर, द बैंक निफ्टी ने ये रेंज ब्रेक कर लिया. सो दैट मींस it may resume its upward movement over now a period of time such that it can reach its previous high, which is at 32,600 plus. अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें, टुडे निफ्टी मेड अ बुलिश कैंडल, बैंक निफ्टी मेड अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल. एंड अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट में ऑल्सो बोथ ऑफ द इंडाइसेस मेड अ bullish candlestick here, right? So that's a good news for the market, although the international markets today had been in a downside, but our market showed up a good resilience and it sustained the downside and changed the downside to upside in the last 4-5 hours of the trading. Now अगर हम ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन पर्सपेक्ट से कल के लिए देखना चाहें फ्रेंड्स, अगर निफ्टी में एनी काइंड ऑफ डाउनफॉल कम्स व्हिच मे बी बॉट आउट, the support levels would be 14,148 downside, second level will be 14,100, third level will be 14,050. अगर 14,050 का लेवल टूटता है तो then we have this 23% Fibonacci level here at 13,958 or 960, you can consider that, right? So ये support level है and back निफ्टी का, and upper higher side में 14,212 हमारा पहला रेजिस्टेंस है जो कि आज का हाई भी था, एंड सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम्स एट 14,249, थर्ड लेवल आता है 14,280 एंड फोर्थ लेवल आता है 14,300 में. So we can roughly say that the range what we could see for tomorrow in the trading session could be somewhere around 14,000 to 14,300 की रेंज हमको यहाँ प्राइस एक्शन से करीब करीब
दिखाई दे रही है, राइट? सो दैट्स ऑन निफ्टी साइड। लेट्स से बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स हमारा डाउन साइड 31,510 पे पहला सपोर्ट, सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारा 13,384 पे, एंड थर्ड लेवल सपोर्ट है 13,212। अगर 13,212 का लेवल टूटता है तो देन वी हैव गॉट आर फिबोनाची एट 31,110। अगर ये 23% फिबोनाची लेवल टूटता है तो आज की लो कुड बी टुमारोज लास्ट सपोर्ट सिस्टम 30,952 पे ये है, राइट? सो डाउन साइड 30,952 अवेलेबल है, और अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर जाती है तो पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 31,773 जो कि आज का रेजिस्टेंस था, आज का हाई पॉइंट था। सेकेंड 31,989 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। थर्ड रेजिस्टेंस मिलता है 32,196 पे, एंड फोर्थ मिलता है 32,347. सो दीज आर द रेंजेस you should jot down. Of course, at the end of the day, at the end of the session, we would be looking at what kind of intraday trading opportunities are there for you for tomorrow in both the indices, right? But at this point of time, let's have a look at what kind of data points, what kind of pressure is being built based on the data points. So bulls and bears ने किस टाइप के पोजीशन बनाए हैं वो हमको 7 जनवरी एक्सपायर होने वाले ऑप्शन चेन डेटा से देखने को मिलेंगे। सिंस मार्केट हैज क्लोज्ड एट 14,200 लेवल टुडे, सो हम देखेंगे उसके सराउंडिंग में आर एट द मनी विल बी एट 14,200। सो 14,200 पे आज हमको 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे फ्रेंड्स, एंड ओवरऑल 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये सपोर्ट 1 का काम करेगा, सपोर्ट 2 का काम करेगा 14,150, जहां पे ऑलमोस्ट 9.17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स 14,100 पे, उसके बाद अच्छा सपोर्ट है 14,050 के लेवल पे भी, राइट? ये भी एक सपोर्ट लेवल है। वाओ! सो सपोर्ट लेवल्स काफी स्ट्रांग बने हुए हैं, एंड एट द लेवल ऑफ 14,000 यू कुड सी मैसिव put open interest here that will work as a final support, right? So 14,000 का जो लेवल दिख रहा है वहां पे मैक्सिमम OI है फ्रेंड्स, that's indicating that 14,000 का लेवल मार्केट में कल नहीं टूटने वाला है। एंड हमने प्राइस सेक्शन में भी मोर और लेस वही रेंज देखी थी। नाउ अगर हम कॉल साइड में देखें तो लेट्स सी कि कॉल साइड में बेयर्स ने क्या किया है आज। अगर आप देखेंगे तो बेयर्स ने उनकी बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे unwinding की है, right? So unwinding क्यों की है? Because they know that the market is not going to go now below these levels. और अगर आप देखें 14,000 के लेवल पे, although there is a 1 million contract, but 6 lakh contracts और 6.23 lakh contracts यहाँ से कैंसिल कर दिए गए या इनमें लॉस बुक कर लिया गया है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी although 14,100 पे इनफैक्ट अनवाइंडिंग नहीं हुई, थोड़ी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। 2.3 million contracts यहाँ पे हैं। So 14,100 if the market goes 100 point down could emerge as a resistance level, but as of now we'll not consider that as it is in the ITM। 14,100 पे unwinding हुई है, but overall still यहाँ पे भी 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। So हमारा पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आता है फ्रेंड्स 14,200 पे, जहां पे कि आपको ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी 1.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए। सो 14,200 पे भी बेयर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला है, राइट? नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको मिलता है फ्रेंड्स 14,250 पे, जहां पे कि 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एंड उसके बाद में 14,300 पे हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट resistance hai, which will work as R3, and here we can see 3.3 million contracts and freshly 1 million contracts यहाँ पे create हुए हैं। So looking at now the expiry is one day after on 7th, आज मतलब कल की मार्केट है और परसों की मार्केट है, राइट? तो we can consider that this would be the range on upside, so we can say 14,000 से 14,300 की रेंज हमको निफ्टी में दिखाई दे रही है कल के लिए, राइट? ऑफ कोर्स अगर 14,300 टूटता है तो 350 इज आल्सो अ गुड रेजिस्टेंस। यहाँ पे 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसके बाद में 14,400। सो
कॉल राइटिंग डेफिनेटली हुई है, बट उतनी कॉल राइटिंग नहीं हुई जितनी की पुट राइटिंग हुई है, और जिस हिसाब से पुट की ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रही है। 14,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है. दिस कुड वर्क पॉसिबली एज अ वीकली upper limit, right? So for tomorrow we are considering 14,300. Now ये option chain का जो PCR है friends, let me jot down that PCR is around 1.28, जो कि हमको एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है. यहाँ पे माइल्ड बुलिश इंडिकेशन हमको निफ्टी में कल के लिए भी दिखाई दे रहा है. 1.28, let me jot down it. And similarly हमने बैंक निफ्टी का PCR देखा, which is now improved from 0.61 to 1.07, which shows a neutral bias, and the range seems to be 31,000 to 32,000. Now let's just have a look in the few of the international markets just to gauge what kind of environment is being built, because that will impact our market as well in the first when the our market opens, right? So अगर हम डेक्स जर्मनी की और FTSE लंदन की बात करें फ्रेंड्स, so we were witnessing bearish pressure there, and I hope by now some buying would emerge. But still, if you can see that although FTSE में थोड़ा बाइंग इमर्ज हुई है, यहाँ पे जो रेड कैंडल थी अभी वो ग्रीन बन गई है, लेकिन डेक्स जर्मनी इज स्टिल इन रेड एंड इज मेकिंग इनडिसाइसिव कैंडल, राइट? सो बोथ आर काइंड ऑफ this is a doji candle in DEX, while as in FTSE London it is a indecisive spinning top kind of candle. So यहाँ पे बहुत अच्छे इनपुट्स हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं कल के लिए एज ऑफ नाउ फ्रॉम यूरोपियन मार्केट. नाउ वी लुक एट द यूएस मार्केट. S&P 500 एंड US 30 के फ्यूचर को देखते हैं. सो यू विल गेट सम हिंट्स फ्रॉम हियर फॉर टुडेज मार्केट, फॉर टुमारोज मार्केट, सच दैट you can take the trading cues from it. Of course, freshly आपको कल वापस से ये मार्केट देखने पड़ेंगे, इनके फ्यूचर देखने पड़ेंगे in the morning. But as of now, let's see what's happening there, right? So let me open the chart, friends. It's taking few seconds. And meanwhile, what we can discuss while the charts are opening is what kind of provisional data is available. Today, FIIs were net buyers with a 986 crore in cash market in equities, while as a DIIs, as usual, were the net seller with a 490 crore. So that means smart money is still, flowing in. एंड ये साल के ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग डेज हो गए, और तीनों ट्रेडिंग डेज में FIs वर द नेट बायर्स. We are expecting if this week goes with a smart money, then rest of the month could carry with that kind of bullish sentiments. अगर हम ऑप्शन साइड में FIs की पोजीशन देखें या प्रोज की पोजीशन देखें फ्रेंड्स, तो दे आर साइडवेज. हाउएवर आर फ्रेंड्स who are retail traders, they are mildly bullish. एंड यूएस मार्केट अब आपके सामने में चार्ट खुला है फ्रेंड्स. सो सुबह बेयरिशनेस थी, यहाँ पे अभी थोड़ा पिकअप कर रहा है. इफ यू कुड सी दिस ट्रायंगल पैटर्न, इट्स मार्केट का जो structure है that is bullish. It's in a triangle pattern, and you could see a flag pattern here, but it needs a little boost to to go 2 to 3% above, so that the breakout takes it to the next level, and the next level would really be worth celebrating on the upside of the market. But as of now, again, US markets are consolidating. A lot of changes happening in US. There are 2 Senate seats which are still under consideration, जिनकी voting होनी, जिनकी counting होनी है, और that will decide who will have the control in both the houses of law, right? So that needs to be seen in a day or two. That would come, and then possibly this market is waiting for the cues from the political stability or the strength. Political stability to ban gayi hai, but strength to make the law, that needs to be considered here in the US market. Now, if we go back to our market, we can see that 1 minute, let me make these settings, friends. Give me a minute. Sometimes the charts become slow and they slowly respond, right? So अगर हम निफ्टी के RSI को देखें आज की डेट में, तो निफ्टी का RSI है somewhere around 77. So strength तो definitely निफ्टी में बढ़ रही है.
एंड एट द सेम टाइम जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, वी हैव बीन विटनेसिंग द मार्केट इज गोइंग इन ओवरबॉट जोन, राइट। जैसे मार्केट ओवरबॉट जोन में जाती है तो करेक्शन एंड कंसोलिडेशन आर द key features which one should understand, that the market cannot keep on going up every day. So that may be something on the card for tomorrow or in coming days, right? So that would also be, that also needs to be seen tomorrow, that whether the market corrects, whether it allows the overbought indicators to cool off. Nifty ka as of now, uh, अगर आप पी पी रेशियो देखेंगे फ्रेंड्स, सो इट्स ऑल टाइम हाई एट 39, एंड ऑफ कोर्स वन कैन जस्टिफाई इट बिकॉज एज ऑफ नाउ द अर्निंग इतनी ज्यादा कम है हमारी कि इससे ज्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि इससे कम पी की उम्मीद नहीं कर सकते हो, राइट। सो एज लॉन्ग एज निफ्टी इज अबाउट 13,800 मार्क, वी आर बुलिश। ऑफ कोर्स 13,800 के नीचे अगर निफ्टी जाती तो यू वुड सी दैट selling interest or profit booking interest would be intensify in our market. So now look at what could be possible in smaller time frames such that we can make out our trading strategy for tomorrow. So again, as I was saying, that market अगर नीचे ओपन हुए, आज के लिए मैंने बोला था कि अगर मार्केट नीचे स्टार्ट होता है, गैप डाउन स्टार्ट होता है, तो these levels, these green lines, support lines would act as a buying opportunities, and that precisely the same thing happened. Market open, gap down, and immediately buying interests were visible. Of course, market एक 1.5 घंटा करीब करीब रेंज बाउंड रही। अब कल के लिए क्या करेंगे, वापस अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है, लेट्स से फॉर निफ्टी, अगर निफ्टी 14,300 या 14,280 या 250 के लेवल पे स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, एंड downwards move लेती है, तो then you would see profit booking happening and the market may come towards 14,148. So ऐसे में आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने से पहले ये जरूर देख लें ओआरसी बराबर से ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं ओआरसी में, और यहाँ पे वॉल्यूम राइज हो रही है कि नहीं। शॉर्ट करने के लिए ये भी जरूरी है कि आरएसआई शुड बी लेस देन 50 और बेटर 40। सिमिलरली अगर आपको कल मार्केट गैप डाउन स्टार्ट मिलती है 14,100 के लेवल पे या 14,057 के लेवल पे, देन दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ कंसीडर 14,148 से 14,212 के लेवल पे अगर मार्केट खुलती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इन दिस एटलीस्ट वेट फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, ओआरसी ब्रेकआउट होने दें, एंड आपकी स्ट्रेटजी जो भी डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड कराती है वो डायरेक्शन में स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है हमको, अगर बैंक निफ्टी सपोज करे कल 31,000 के लेवल पे कहीं भी 31,200 और 31,150 के आसपास में, या कहीं या 31,348 के लेवल पे भी ओपन होती है, ये जोन में भी आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे। और अगर बैंक निफ्टी 31,900 और 32,100 200 के लेवल पे स्टार्ट होती है, यू वुड सी अगेन अ प्रॉफिट बुकिंग विल स्टार्ट देयर, सो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। ऑफ कोर्स द बेस्ट पॉलिसी इज सिंपल, वेट फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, लुक एट ओआरसी ब्रेकआउट। ओआरसी कैंडल को डाउन साइड में ब्रेकआउट मिलता है और आपका selling volumes are rising, definitely you can short it if your RSI is below 50 or below 40। एंड उसके अलावा आप MACD या जो भी आपके सुपर ट्रेंड या कोई भी VWAP जो भी टूल लगाते हो, वो ऑफ कोर्स शुड सपोर्ट योर ट्रेडिंग strategy. I'm sure our students already know that what kind of strategies we use, which have already been taught to them. Do follow those strategies, friends. And market is on sell on rise, buy on dips, right? And whenever market has a philosophy, flow with the market, not against it. And when you are trading, do trade with stop losses, and if you are in profit, do consider using a trailing stop loss method to protect your profits, right? Keep on booking the profit, because nobody ever becomes poorer by booking the profits. So trading range हमारी कल के लिए जो निकल के आ रही फ्रेंड्स 14,000 से 14,350 की निकल के आ रही फॉर निफ्टी with a positive bias, while as a bank nifty के लिए 31,000 से 32,200 की रेंज है, जो कि with mildly
bullish pressure के bullish bias के साथ में है. As technical indicators are showing the market to be in a overbought zone, so any kind of correction or consolidation should not surprise you. So when the market consolidates, the best way is to write the call or put options and with a hedging, so that you can get the value for time. Theta की value आपको मिलनी चाहिए उसमें. And do consult your trading coach, who could help you to make more profits, right? I'm sure with this, friends, you are getting a clear you know guidance or clear direction in what way the market can be traded on intraday trades, and you are becoming a profitable trader. Thank you very much for watching the video. To get latest information, or to get latest videos, do subscribe our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon, such that whenever we upload any new video, you get a notification. And don't forget to also share these videos with your friends and trading communities, as by sharing the knowledge, your knowledge gets enhanced multiple folds. Thank you once again for watching and liking the videos, friends. Good luck, happy trading, happy investing for tomorrow.